Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss very important topic that is Census 2011. That means भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके बारे में आज हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और उसका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे. एंड फ्रेंड्स वी विल ऑल्सो टेल यू how many type of questions can come in your exams, and after this session we will also conclude a session of question and answer. Okay, so friends, do subscribe this channel for regular updates. And about our channel, this is basically Current Affairs Funda and we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and your learning is priceless, so please do at least for them. If you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel. This is facebook.com/current affairs funda CAF. Okay, so this is our Facebook channel, and friends, click over the subscribe button for regular updates. Okay, so friends, today we will discuss the census of India 2011 that conducted in 2011. So what was the motto? The motto of that session, the census, that was the or census or फ्यूचर. तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो मोटो था, जो उनका एक एम्बिशन था, वो था हमारा सेंसस और हमारा भविष्य. ठीक है, और सेंसस और फ्यूचर. ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कोड फ्यू पॉइंट्स एंड ऑल्सो हाउ द सेंसस रिलीज, व्हाट आर द पर्सन बिहाइंड टू रिलीज द सेंसस. So we will decode each and everything in this lecture. Okay, so first of all, the provisional figures of India largest census 2011 were released in New Delhi on 31st of March 2011 by the Union Home Secretary G.K. Pillai and RGI, that means Registrar General of India C. Chandramouli. Okay, so these are the two person behind to release the census. Basically दो लोग जो हैं उन्होंने इस सेंसस को रिलीज़ किया और इसका प्रॉपर डेटा को टीम ने कलेक्ट करने के बाद में जो रिलीज़ की बारी आती है, ये यूनियन होम सेक्रेटरी, ठीक है, ये जो यूनियन होम सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, उन्होंने जी.के. पिल्लई जी ने और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सी. चंद्रमौली, इन दोनों की कोलैबोरेशन से सेंसस 2011 का इनॉग्रेशन हुआ और ये रिलीज डेटा पब्लिक में दिया गया. सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स, द फिफ्थ सेंसस ऑफ इंडिया and the seventh census of independent India 2011 was started on 1st of April 2010 with President Pratibha Patil being the first citizen to be inaugurated, followed by the Vice President Hamid Ansari. Okay, basically this is the 15th census of all over the time period, and if we are talking about the independent India, then this is the number 7th. Okay, so भारत की आज़ादी के बाद अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो ये नंबर 7th है, बट अल्टीमेटली ये ओवरऑल की बात की जाए तो ये 15 नंबर का सेंसस है. ओके, एंड फ्रेंड्स, जो सेंसस स्टार्ट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होता है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होती हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है. सेकेंड काउंट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को. ओके, सो इन द सेंसस 2011 द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दैट वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम प्रतिभा पाटिल, एंड आफ्टर दैट द सेकेंड पोजिशन दैट वाज द वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी. ओके, सो फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द सेंसस 2011. भारत की जनगणना 2011 के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. दिस इज द 7th सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक. सेकेंड थिंग इज देयर फ्रेंड्स, लार्जेस्ट सेंसस इन द ह्यूमन हिस्ट्री एवर कंडक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टिल नाउ. थर्ड वन, बेसिकली इट कवरिंग अ लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक 640 districts and 5,924 sub districts, 5,767 tehsils and 7,742 towns, and friends, over 6 lakhs villages were concluded in the census 2011. Okay, so this is really a huge data. देखिए दोस्त, अगर हम 2011 जनगणना की बात की जाए तो यहाँ पर ये 7वां भारतीय आज़ादी के बाद का सेंसस है, जनगणना है, और इसमें 640 जिलों को कंक्लूड किया गया और 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट्स को कंक्लूड किया गया और 5,767 तहसील्स को इसमें इंक्लूड किया गया और 7,742 टाउन्स को इंक्लूड किया गया और 6 लाख से ज़्यादा गांव जो हैं उनको इसमें उनके डेटा को इसमें इंक्लूड किया गया. ओके, सो फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑल्सो, सो यू शुड राइट डाउन दिस वन ऑल्सो. The estimated cost, that was the 22 billion rupees,
And what is the motto? The motto of 2011 census, that was the or census or future, that I have already written in the first page. Okay, and friends, next thing is here, census 2011 is the 15th census of India since 1872. Okay, but if we are talking about the independence India, that is the number 7th, but ultimately that is the number 5th फ्रॉम 1872. देखिए 1872 से सेंसस जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ था, और ये अंग्रेज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स द फर्स्ट सेंसस वाज इनोग्रेटेड. ओके, तो 1872 में पहला सेंसस ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पर. बट right now if we are talking about the independence India, then that is the number 7th census. Okay, and friends, ultimately the total cost estimation to conduct this census 2011, that was the 22 billion, 22 बिलियन रुपीस का खर्चा आया था इस सेंसस को कंडक्ट करने में. एंड बेसिकली दिस सेंसस वाज हेल्ड इन 2 phases. ओके, सो फर्स्ट फेज, that was the house listing and housing census from April to September. Second one, that was the population enumeration from 19th Feb up to 28th of Feb. Okay, so basically जो सेंसस 2011 था वो 2 phases में हुआ था. पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग को हमने काउंट किया था, जो कितने हाउस हैं और कितने लोग उस हाउस में नंबर ऑफ पीपल हैं. उसके बाद में हमने पॉपुलेशन इनोमिनेशन किया था कि एक एक लोगों का प्रॉपर डेटा इंक्लूड किया कितने लोग रह रहे हैं. ओके, इस हिसाब से ये जो जनगणना है ये 2 फेज में हुई थी. Second, friends, this is really all the data are here. Suppose this is the 100% graph. Okay, so 100%, that is equal to approx 121 crore. That means 1210 million. Okay, so this is the population of India at the time of 2011. Okay, so where 48% that was the female and 52% that was the male. Okay, so I am giving you exact figure right now. Census 2011, that is 1210 million is the total population, which 623.7 million that was the males. Okay, and 586.46 million, approx 48.46% that are the females. Okay, so exact data that was the 48.46 and the males that was the 51.54%. Okay, so this is the कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 2011. तो देखिए 2011 के टाइम की अगर हम बात की जाए, 2011 जनगणना में हमारी टोटल जो पॉपुलेशन थी वो थी 121 करोड़. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 1210 मिलियन, और इसमें से 623 अप्रॉक्स 62 करोड़ जो लोग थे वो थे मेल, और 58 करोड़ लोग ये थे फीमेल. ओके, एंड फ्रेंड्स, द मेजर हाईलाइट ऑफ द सेंसस 2011, सो आई विल एक्सप्लेन these all data with the help of a graph. Okay, so basically if we are talking about the 2001 census and 2011 census, basically 181 million, that is the increment process. Okay, so friends, see the data here in the 2011. Okay, so complete data that was the 1210.19 million, approx 121 crore. Okay, but in 2001 that the data that was the approx 102 crores. Okay, and friends, in the 1901 the total data that was the 238 million. Okay, तो देखिए 1901 में हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 238 मिलियन, बट राइट नाउ और टोटल पॉपुलेशन दैट इज 1210, 121 करोड़ हो चुकी है. लेकिन अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, दैट मीन्स कि 2001 की बात करें, तो 2000 में जो हमारी पॉपुलेशन है वो थी 1028, 1028 मिलियन. टोटल जो गैप है वो 121 मिलियन का इंक्रीमेंट बेसिकली हुआ है. ओके, सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय मोर देन 181 मिलियन. ओके, सो फ्रेंड्स, यू शुड राइट डाउन ऑल्सो दिस पॉइंट. ओके, सेकेंड थिंग इज देयर, द पॉपुलेशन state of the country. There are basically top 5 populous state. First one is the Uttar Pradesh, second one is the Maharashtra, third one is the Bihar, fourth one is the West Bengal, and last one is the Andhra Pradesh. Okay, so highest populous state, so this is the most important question, which one is the highest populous state? That is the उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये है उत्तर प्रदेश. Okay, so there are some history trivia about the Uttar Pradesh. Basically 199.5 million is the population.
of Uttar Pradesh at the time of census 2011. Okay, so this is the most populous state in the country, followed by the महाराष्ट्र, that is 112 million. Okay, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन थी, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है. द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ द 6 most populous state have declined during 2001 up to 2011 compared to the 1991 up to 2001. अगर हम 2001 से 2011 और 1991 से 2001 के डेटा के बीच में कंपेयर करें तो जो परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ है, 10 साल में जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की स्टेट वाइज, तो वो हमारी क्या हुई है, कम हुई है. ठीक है, डिक्लाइन हो गई है. इस उत्तर प्रदेश की अभी टोटल है 199.5 मिलियन, इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री. पॉपुलेशन इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील. ओके, सो दिस इज रियली वेरी हायर देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील. ओके, तो उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है जितनी एक ब्राजील देश की पॉपुलेशन नहीं है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, 5 लीस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. ओके, सो लक्षद्वीप हैविंग द smallest population, that means lesser than all the state or union territories in the city in the country. So this is all about 64,000, and after that Daman and Diu, that is 2,42,000, and after that Dadar and Haveli, that is 3,42,000, and after that Andaman and Nicobar Islands, that is 3 lakhs, and after that Sikkim. Okay, so Sikkim's population, that is 6,07,000. Okay, so friends, least populous union territories, that is Lakshadweep, and Sikkim is the least populous states. Okay, highest populous state is the Uttar Pradesh. So friends, we will discuss the population share of states and the union territories. Okay, in the India 2011, if we are talking about the 2011 census, so we will discuss here the share of all the individuals states. Okay, so friends, see this graph very carefully. First of all, this is Uttar Pradesh. Okay, so basically Uttar Pradesh having the total population, that is 16% of the total population of India, and after that Maharashtra, this is 9%, and after that Bihar, this is also 9%, approx 9%. Okay, so but both are not the exact equal, but if we are talking about the rounding figure, that is 9%. Okay, West Bengal 8%, and Andhra Pradesh 7%, and friends, Madhya Pradesh 6%, and Tamil Nadu 6% also, and Rajasthan 6%, and friends, Karnataka 5%, Gujarat also 5%, Odisha, Kerala, Jharkhand, Assam, these all the 3% of the total Indian population, and Punjab 2% basically, and friends, Chhattisgarh, Haryana also 2%, and Delhi, Jammu Kashmir, Uttarakhand, these all the basically 1%, and other states or union territories having 2% of the total Indian population. Okay, so these are the basically data that I have discussed with you. Okay, and friends, now let's discuss the density population of India. Okay, so these data are the very important. Okay, so we will decode here also. So friends, India's average square area per kilometer, that is approx 32,87,240, and density of the 2011, that is 382. डेंसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कितना ज़्यादा घना एरिया है. ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें कि एक छोटा सा एक कोई एरिया है, इस एरिया में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो ये भी उसकी डेंसिटी हुई. अगर इस एरिया में 100 लोग रह रहे हैं तो ये भी उसकी डेंसिटी हुई. ओके, दैट मीन्स कि the density of 2011 of India, that was the 382, and the density of 2001, that was the 324. Okay, and friends, Delhi's area square kilometer, that is 1483, and the density, that is really very huge, approx 11,320 is the density of Delhi. दिल्ली की डेंसिटी है 11,320. दिल्ली का एरिया जो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस एरिया में 11,320 डेंसिटी की पॉपुलेशन रहती है अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं.
Okay, but density of Delhi, that was in 2001, that was the 9340. Okay, and friends, we are talking about the top 10. So up to the 8th level, that was the Kerala's area is 38,000 and the density population, that is 860. Okay, and friends, if we are talking about the UP, so UP's area, that is 2,40,000, but the density population, that is 829. Okay, so this is the density measurements here. And friends, density of population per square kilometer, so we will complete overall. In the 2001, the density per square kilometer, that was the 325 person, and right now this is 382. So basically there is a increment. Okay, so in the current decade. Okay, 2001 में 325 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, बट 2011 में 382 डेंसिटी पॉपुलेशन हुई है. So question can be come in this format. The density of population of India, that is 382. So you should remember this one. Density population of India, भारत की density population कितनी है? 382 है. Highest density state which one? This is the Bihar, 1102, and lowest density state is the Arunachal Pradesh, only 17. Highest density union territories, this is Delhi, 11297. Lowest density union territories state, that is 46 and 1. Okay, but Tamil Nadu on the 6th place, that is the 555. Okay, so this is the demographic of density of population. Okay, so friends, let's discuss something more, statistics of overall sex ratio. Okay, so what is the currently sex ratio, and which one states top on the sex ratio, which states have the lowest sex ratio. Okay, so question will be from this side only. Okay, so overall sex ratio basically increased by the 7 points, that was the in 2001, and that is in 2011. Okay, so this basically increased from 7 points. Okay, so you should remember this one also. तो देखिए 2001 में जो सेक्स रेशियो था, ये था 933 पर 1000 मेल्स. ठीक है, लेकिन अभी करंटली कितना है? 940 है, और 1000 लोगों के ऊपर. ओके, सो द क्राइटेरिया ऑन ऑल द 1000 पर 1000 pupil. Okay, per 1000 male person. Okay, so these are the basically females, and this is also the data of female per 1000 males. Okay, so this is the sex ratio. Okay, but basically that was increased by the 7 points. Still 3 states are the constant, that was the Jammu and Kashmir, Bihar and Gujarat. Okay, so there the data was not increased. Okay, so we will decode this thing in a convenient and efficient manner. So see this table right now. So this is the sex ratio of the 2011 census table. Okay, so major states basically population 10 million and above, so that's why we are talking about here. So Kerala having 1084 sex ratio per 1000 male. Okay, so there are basically 1084 females on every 1000 male person. Okay, Tamil Nadu having 995, and Andhra Pradesh this is 992, and Chhattisgarh this is 991, and Odisha that is 979. Okay, so friends, bottom 5 states in the perspective of sex ratio. Haryana, this is the very worst sex ratio. Only 87 females are there for per 1000 males. Okay, that's why, because a lot of things happen, the child killing. Okay, when a newly girl born, then basically some people, they don't want a children like a female, that's why they are killing them. सो वी कैन से लाइक दिस भ्रूण हत्या. तो जो भ्रूण हत्या हो रही है, जैसे कि सेक्स पता कर लिया गर्भ में ही कि मेल है या फीमेल है, तो अगर मेल है तो उसको इस दुनिया में आने दिया जाता है, और अगर फीमेल होता है तो उसको वहीं पर मार दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड द भ्रूण हत्या. Okay, so this one basically a very worst and cursed for this country, and the people are getting aware day by day. That's why Prime Minister Mr. Narendra Modi has inaugurated a lot of government scheme like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके, जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जो सोशल अवेयरनेस दे रही हैं लोगों के लिए कि
बेटियों को प्राथमिकताएं दी जाएं। तो हरियाणा के अंदर क्या है, सेक्स रेशियो सबसे कम है if we are talking about the overall states, okay, but Kerala is the top. Okay, second thing is Jammu and Kashmir, this is 889 per 1000 male person, Punjab 895 and Uttar Pradesh 912 and Bihar this is 918. Okay, so friends, kindly note down each and everything from this video. Okay, now let's see the females per thousands male in last decades. Okay, so if we are comparing from 2001, okay, and 2011, okay, so in the 2001 the data that was the 933, but right now this data is 940. Okay, so kindly note down this one. In 2001 that was the 933, but right now this is 940. Okay, so friends, in the starting of the year, that is 1901, so in the 1901 the sex ratio that was the 972. Okay, but right now this is 940, so a huge decline here, just because at the time when the generation goes, then a lot of people are killing to the innocent females, okay, at the time of their first stage. Okay, that's why the females are getting low and males are increasing. Okay, so but the people are getting aware, that's why in the 2011 the sex ratio that is 940. Okay, but in the 2021 I hope this will be increased. Okay, so the graph will be here, I think. Okay, but I'm not sure, but I think it should be. तो देखिए 1901 में जो सेक्स रेशियो था वो था 972 1000 फीमेल्स पर, लेकिन अभी देखते हैं 940 हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं और इस प्रचलन में बेटा पाने के लिए लड़कियों के गले दबाए हैं और ऐसा किया है। दैट्स व्हाई दिस इज द कर्स्ड फॉर दिस कंट्री। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है, लेकिन हमें इसको दूर करना है। दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग अवेयर, लोग दिनों दिन जागरूक हो रहे हैं। इसलिए भारत में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजनाएं। ओके, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यू शुड राइट डाउन दिस डेटा ओनली। सेक्स रेशियो इन इंडिया दैट इज 940, हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट केरला 1084, lowest sex ratio in the union territories that is Daman and Diu 618. Okay, but lowest sex ratio in the state that is Haryana. Okay, so friends, this is my request to you. First of all, kindly note down the question very carefully. सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. Whether the question is asking about the state or union territories, then you should choose. Okay. Next friends, let's discuss some data regarding the child sex ratio. Okay, so when compared with the 2001, child sex ratio basically declined from 927 to 914. Okay, so that was the trends compared to the last decade, except in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Mizoram and Andaman and Nicobar. Okay, so these are the basically constant states. Let's see the table. Highest states in the ranking of a state of the child sex ratio, that is Mizoram 971 per 1000 boys, that means male children. Okay, lowest state that is Haryana 836, highest union territories that is Andaman and Nicobar 966 and lowest union territories that is Delhi 866. Okay, so this is the basic trends that you should learn from this table. Okay, now friends, let's discuss the literacy rate of India. भारत की साक्षरता के बारे में बात करते हैं. How many people are literate and how many people are illiterate? कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं. तो शेयर ऑफ लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स पीपल इन 2001 and 2011. So this is the graph of 2001 and this is the graph of 2011 at the time, at the concern of literacy rate. Okay, so in 2001 basically 65% people were literate and 35% it were illiterate. Okay, and friends, right now this graph basically moves. Okay, this graph basically goes to the
increment process. That's why the data that is 74%. Okay, so in the 2011 total literate person, that means पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 74% है, एंड 26% जो है अभी भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं. ओके, सो फ्रेंड्स इन द लास्ट डिकेड that is the graph goes from 65% up to 74%. Okay, so this is a good signal for this country. Approx 9% increment in the literacy rate of India for the last decade. अगर हम अगले 10 सालों से बात करें कि 2001 में क्या ग्राफ था और 2011 में क्या ग्राफ है, तो 2011 में 65% से बढ़कर 74% डेटा हुआ है. Next friends, state statistics literacy rate as per the condition of literacy rate. So top 5 highest literacy rate of India: Kerala 93.91%, that is approx 94%. Okay, so this is really a best signal for this country. So Kerala is the हाईएस्ट स्टेट एज द कंडीशन ऑफ लिटरेसी रेट. केरला सबसे ज़्यादा साक्षरता के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, 94% लोग हैं. और मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ, केरला में सबसे ज़्यादा सारे लोग, मैक्सिमम लोग हैं उनके पास में बैंक अकाउंट्स भी हैं, बिकॉज दे पीपल आर लिटरेट. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी हैविंग 92.28% पीपल आर लिटरेट. ओके, मिजोरम 91.58% पीपल आर लिटरेट. त्रिपुरा 87.4% एंड गोवा 87.7%. Okay, so lowest in Bihar, this is 63.82%, and Tamil Nadu basically is the 14th place, 80.33. Okay, so friends, literacy rate as I told you earlier, from 64.83 in 2011, but right now this is 2001, that was the 64.83, but right now in 2011 that is 74.4%, that means 9.2% decadal growth. ओके, तो 10 सालों में जो ग्रोथ बढ़ा है साक्षरता के हिसाब से वो 9% अप्रॉक्स इंक्रीमेंट हुआ है. सो टोटल पर्सन्स लिटरेसी रेट इज द राइट नाउ 74%, बट इन 74% 82.14% दैट आर द मेल्स लिटरेट. ओके, एंड 65.46% इज द फीमेल. ओके, बट फ्रेंड्स हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट दैट इज केरला 93.91% and lowest literacy rate in a state that is Bihar 63.82%. Okay, best performer is the Kerala and worst performer is the Bihar if we are comparing from the two top level states. Okay, so Kerala basically top from the top to bottom and Bihar basically top from the bottom to top. Okay, so basically I am comparing from the two states as per the condition of everything. Okay, so lowest percentage decadal growth in the population of India, that is 4.86%. Okay, but in the Bihar this is the highest percentage decadal growth is the 25.07%. देखिए, जिस हिसाब से population increment तेजी से होगा तो क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है, अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगी, बिकॉज देयर आर नॉट द सफिशिएंट मोड ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री. ओके, सबके लिए शिक्षा के बहुत अच्छे व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर. ओके, बट दे आर गेटिंग इम्प्रूव, ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं. तो बिहार ने क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ किया है, लेकिन केरला ने कम किया है. And highest literacy rate, that is 93.91%, but lowest literacy rate in India, this is 63.82%. Okay, highest male and female literacy rate in India, this is 96% and 91.98%, and the lowest male and female literacy rate, this is 73.39 and 53.33%. Okay, highest sex ratio, that is the 1038 females per 1000 males. Okay, and this is the fifth lowest sex ratio, 916 for every 100 males, but still Haryana is the lowest sex ratio. Okay, this is really worse than the Bihar.
So friends, we will also discuss the India in the bird population. Okay, suppose the bird population that is 100%. Okay, so we will discuss what is the share of India in the bird population. Okay, so India having 17.5% of the bird population. Okay, USA having 4.5%, Indonesia 3.4%, Brazil 2.8% of the bird population, Pakistan 2.7% of the bird population, and Japan 1.9% of the bird population, Russian Federation 2.0% of the bird population, Nigeria and Bangladesh, these are approx 2.5. Okay, and friends, other countries, the remaining countries, that are the 14.2% of the bird population, and the very close to the India, this is China. China having 19.4% of the bird population, and this is the bird's most populous country, okay, in this planet, and after that India. Okay, so this is the basic trends. Next friends, India versus China. If we are talking about the China and India, so in 2001 the gap between India and China, that was the 238 million people. Okay, but right now in the 2011 the gap has been reduced, and this is right now 131 million. Okay, so this is the very bad signal because India is growing a very fast as per the concern of पॉपुलेशन. ओके, तो भारत में क्या है, जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, इस वजह से जो 2001 में गैप था 238 मिलियन का, लेकिन अब ये गैप 2011 में जो गैप है ये 131 मिलियन का हो गया है. इसका मतलब हम चाइना को 2030 तक पीछे कर देंगे. ओके, सो बाय द 2030 इंडिया में बीट चाइना. Okay, this is because growth rate of India, the growth rate of China, this is 0.53%, but India's growth is 1.64%. Okay, so it's all about the comparison in between China and India. Okay, I hope friends you like these contents, so do like this video, comment and share also. अगर आपको हमारे कंटेंट बहुत अच्छे लगे हैं तो आप अपना लाइक बटन जरूर प्रेस करिए इस वीडियो में, because a lot of people will be benefit from this video. Okay, and friends, do comment if you have any query regarding this video or any suggestions. Your suggestions always will be concerned with our team. Okay, and do share this video also. We have prepared a lot of things for you and we will decode day by day. So friends, do subscribe this channel right now for more updates. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.